press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning, class 7th. How are you? Hope you all fine. Welcome back in your mathematics class with new session of simple interest. In previous video, we discussed about the simple interest and the amount and doing some question. Done some question. Now started with second question. Find the amount from the invest of rupees 1500. Principal is given, that is 4500. That is our principal for 2 years. Time is 2 years. And 5 paisa per rupees. It means this is the percentage rate of interest. That is 8R is given 5%. Now we find out the amount. First of all, we find the simple interest. What is the formula of simple interest? P into R into T upon 100. What is P? That is 4500 into R 5 into T is 2 upon 100. Now solid 0 0 cancel. Then there is 450. This is the simple interest. Now we find out the amount. What is the formula to find the amount? That is principal plus simple interest. What is the principal? That is 4500 and simple interest is 450. Now plus it 0594. This is your amount. Is it clear? I hope you understand this question. Now third for homework, in which the time is 7 months. Yes, you convert it in years divided by 12. So time is 7 upon 12. Is it clear? Now come on the fourth question. It is the most important question. Fourth and fifth both are. What is our fourth question? Now the question is says Rahul deposit 7,000 at 7% per annum for 4 or 1 upon 2 years. So and Rohan deposits 700, same amount, but simple interest is 6% for 5 years. Who will get more interest? What amount will each get? तो दोनों का simple interest निकालेंगे बेटा, दोनों का amount निकालेंगे. पहले राहुल के लिए 4 राहुल. Yes. What is the principal? That is rupees 7,000 and rate of interest is 7% and time is 4 whole 1 upon 2. That is 4 to the 8 or 9 upon 2 year. Now first of all we find the simple interest for Rahul. Yes, P into R into T upon 100. What is P? That is 7,000. R is 7 and time is 9 upon 2 into 100. Now 2 0 cancel. 235. Now multiply it. 45 4 is 25 or 9. 45 4 45 49 4 18 20. 2 2 9. This is the simple interest. Is it clear? Now we find for amount for Rahul P plus SI. What is P? That is 225595 is simple interest and P is 7,000. Now plus it 9,295. This is for Rahul. Now we find out same thing for next is Rohan. His principal is simple 7,000. Now we find out the simple interest for Rohan. Principal plus rate into time upon 100. Principal is 7,000. Rate of interest that is 6% and time is 5 upon 100. Cancel it. 2100. This is the simple interest for Rohan. And amount is principal plus simple interest. Principal 7,000 and simple interest is 2,100. There is 9,100. Now question says who get more interest? किसने ज़्यादा interest लिया? This yes. Interest. Rahul interest is more. This is the one and both amount ये हमने पहले निकाली है. Amount is for Rahul is 9,295 and for Rohan 9,100. Is it clear, my dear? Yes. Now next question, that is fifth question. This is also most important question. ये बहुत important था. फोर्थ क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूँ पेपर में जरूर आएगा ये. पहले ही बता दिया आप लोगों को. Is it clear? Now come on the fifth question. What is our fifth question? Yes. Remit deposit rupees 18,000 in a bank. Yes, this is given as principal. 18,000 रुपीस उसने बैंक में जमा किया.
which pay the 6% interest, that is at R is 6% per annum. After 3 years, tenure is 3 years. Withdrawal is the money, उसने 3 साल बाद विड्रॉल करी मनी अपनी निकालनी, एंड बाई से कार ऑफ 19,000, 90,000 रुपए की कार ली उसने, ठीक है। हाउ मच मनी ही लेफ्ट विद हिम, फिर भी उसके पास कितनी मनी रही, तो पहले बेटा मैं देखूंगा उसको इंटरेस्ट कितना लगा उसकी मनी में, 6% के 3 साल का, एंड देन वी फाइंड द अमाउंट कि इतना अमाउंट उसे पैसे अपना 80 का मिला, इंटरेस्ट के साथ कितना मिला, उसमें से कॉस्ट ऑफ कार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना है। सो फर्स्ट ऑफ विल फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ हिज मनी, यस, प्रिंसिपल इनटू R इनटू T अपॉन 100, व्हाट इज द प्रिंसिपल, दैट इज 80,000, rate of interest is 6 and time is 3 upon 100, cancel out, 18 8 da 1440, this is the simple interest. Now he get amount, कितना उसे amount मिला, that is principal plus simple interest. This is the principal is 80,000, 80,000 रुपये मिला है। Next is cost of car plus it 9,404. This is back his money, उसकी money back है, इतना पैसा उसे वापस मिला अपना। Now the cost of car is, कार की cost कितनी, that is rupees 19,000. Left money कितनी उसके बाद मिल जाएगी, टोटल से 9,440 मिलेगी, 94,400, उसमें से 95,000 कार की कॉस्ट क्या हुआ माइनस, देन उसके पास कितना बचा तब भी रुपीस 4,400. Is it clear? So this exercise has finished. Now in next exercise some other question related to, again किसी में वो प्रिंसिपल पूछेगा, किसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, किसी में टाइमिंग पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट में लिए यही फार्मूला, तो मैं अदर फार्मूला बता देता हूँ आपको for next exercise. Yes, for next exercise if we find the principal, then the formula is principal is equal to simple interest into 100 upon R into T, rate into 10. अगर principal find करना है हमें तो ये फार्मूला लगाएंगे, simple interest into 100 upon R into T. Second, if we find out the rate of interest, then the formula is that simple interest into 100 upon P into T. तब ये फार्मूला आपने लगाना है. Is it clear? Next is if we find out the time, then the formula is simple interest into 100 upon P into R. This is for find out the principal. This is for find out the rate of interest. This is for find out the time. Is it clear? Now, come on the question. At worksheet 5, this is our new worksheet and last worksheet of this chapter. Then we do only value based question, बाकी कुछ नहीं करेंगे इसमें, आप ब्रेन टीचर करने की कोई जरूरत नहीं है इसके. इज इट क्लियर? सिर्फ हम इसके वैल्यू बेस तक करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे. इज इट क्लियर माय डियर? चलिए, फाइंड द अननोन क्वांटिटी. फर्स्ट पार्ट, कुछ पार्ट होमवर्क के लिए लिखो, कुछ पार्ट आप अपने आप करेंगे. यस, फर्स्ट इज फाइंड आउट द प्रिंसिपल. एक तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, दैट इज 12%. टाइम पीरियड इज 2.5 years. 2.5 years means 2 to the 4 and 5 upon 2 years. And simple interest, this is also given. Simple interest is 1,200 and also find the amount. दो चीजें फाइंड आउट करनी है, दैट इज प्रिंसिपल एंड नेक्स्ट इज अमाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्रिंसिपल. व्हिच फार्मूला इज यूज्ड वी हियर? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. यस माय डियर, देयर इज वी यूज द फर्स्ट फार्मूला टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल. व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द प्रिंसिपल? सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 upon R into T. What is the simple interest? 1,200 into 100. Rate of interest is 12 and time is 5 upon 2. 2 6 da 6 2 da. Now multiply it. Therefore 2 lakh rupees. Therefore simple interest principal is 2 lakh rupees. So now we find the amount. How we find the amount? That is formula of amount principal plus simple interest. What is the principal? 2 lakh. Sorry, 20,000. This is the 20,000. ये मेरी गलती हो गई थी, मैं 2 लाख बोल रहा था इसे. दिस इज 20,000.
and 20,000 plus simple interest is 1200. Now plus it 00212, therefore 21,200. Is it clear my dear? सेकंड क्वेश्चन का पार्ट में आपको सेकंड क्वेश्चन करके बताऊंगा, आप होमवर्क में करेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा सेकंड क्वेश्चन जब करेंगे तब करेंगे। नाउ कम ऑन द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, व्हाट इज अवर थर्ड पार्ट? Yes, find out the principal. First of all, we find the principal, rate of interest 4%, and time is 3 years. And they are given also simple interest is 120, and also find the amount. Again, we find the principal, rate of interest is given, time is given. अभी मैंने किया था क्वेश्चन बेटे बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका, तो ये आपके होमवर्क का होगा। दिस इज फॉर होमवर्क। Is it clear? Now come on the fourth part. Now the principal are given, rate of interest we find out. In case we find out the rate of interest and timing 3 whole 1/2 year, 7/2, and time simple interest is given 189. We find out the also amount. दो चीजें फाइंड आउट करनी है आपकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेक्स्ट इज सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट। नाउ वी फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द फार्मूला वी यूज? यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड फार्मूला, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? देयर इज 189 इनटू 100, प्रिंसिपल इज 450 एंड टाइमिंग इज 7/2। नाउ सोल्व 9 to the 9 1 9 5 50 2 जा 7 3 जा 3 2 जा 6, डिवाइडेड 2 पर आ जाएगा 3 into 2 into 2, 3 2 जा 6 2 जा 12। ये फॉर फार्मूला रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। नाउ वी फाइंड आउट द अमाउंट। हाउ वी फाइंड आउट द अमाउंट? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल? 450, सिंपल इंटरेस्ट 189। नाउ प्लस इट 9 13 4 5 6 639। Do you understand my dear? I hope you understand all the questions. In next session we discuss the further question of this exercise worksheet 5. Till then, thank you very much.